We are going to discuss the next chapter, and that is chemical energetics. Okay, the chapter is very important. You have to pay your 100% attention. Okay, and these are the learning outcomes of this chapter. You can learn them out for your convenience and start the chapter without wasting our time. So firstly we have to know what are the exothermic reactions and what are the endothermic reactions. Okay, भाई हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हैं क्या, तभी हमारी बात आगे चलेगी इस चैप्टर के अंदर. ठीक है. सो chemical reactions in which heat is released are known as exothermic reactions. कि भाई जिन reactions के अंदर हमारे पास heat produce होती है वो हमारे पास क्या होती हैं, exothermic reactions. ओके, और इसी तरह हम देख लेते हैं कि exothermic का मतलब क्या है. Exo means out and therm means heat. Okay, so features and characteristics of reactions of exothermic reactions. Okay, number one, heat transfers from system to surrounding. Okay, what does it mean? Suppose this is a system. Okay, and when we will heat this, it would absorb. Firstly, the temperature of this system will increase. Okay, not for permanently, initially. Then when some time has passed, the temperature outside, means surrounding, the temperature in the surrounding will increase and the temperature of the system will decrease. Okay, so let's read the point number 2. At the start of a chemical reaction, there is an increase of the temperature of the system, as I told you. Okay, so measured with the help of a thermometer. The temperature will be measured with the help of a thermometer. This is the thermometer. Okay, and then the temperature of the system decreases and the temperature of the surrounding increases. Okay, with the passage of time, the temperature of this system will decrease and the temperature of the surroundings will increase, because it would release energy. Because exothermic reactions release energy, they produce energy. Okay, so the next point is walls of the beaker becomes hot. Okay, when this system releases energy, these walls, because it would release energy, so these walls becomes hot. Okay, number 4, low EA is required to initiate chemical energy. EA means activation energy. Okay, activation energy. Okay, next point is, which is very important. Okay, delta H. What is delta H? Delta H means enthalpy change. Okay, and it is always negative for exothermic reactions. Okay, so moving forward, energy profile diagram for exothermic reactions. In exothermic reactions, reactants are always at the top and products are always at the bottom. Okay, and these axes are very important. Okay, this is potential energy or activity or enthalpy. You can also say it enthalpy change. Enthalpy change. Enthalpy change. Okay, enthalpy change. And at the x-axis we have always reaction pathway. Okay, and you can also write it over here, reaction progress. Okay, so in a chemical change, first bonds are broken down and then new bonds are formed. We will discuss this in detail later in this lecture. Okay, so moving forward, energy contents of reactants are higher than products. As I told you, heat is released when the reactants are converted into products. Okay, this is the graphical representation of
exothermic reactions at room temperature, and this is basically MCQs. You have to remember this, okay? It is important. So moving forward, here we have to draw an energy profile diagram for exothermic reaction without catalyst. Okay, so as we studied right now, in exothermic reactions we have reactants at the top. Okay, I am representing reactants with R. Okay, and it goes like this, and here we have products. Okay, I am representing products with P. Okay, so here we have enthalpy change, enthalpy change. Here we can write reaction progress. I am representing progress with P. Okay, so now activation energy. This is activation energy, and activation energy is always positive. Either it is exothermic reaction or it is endothermic reaction. एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये एक्टिवेशन एनर्जी वो है, एक छोटी सी अमाउंट है जो रिएक्शन को जस्ट स्टार्ट करने के लिए चाहिए हमारे पास. दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, नथिंग एल्स. ओके, एंड enthalpy change, the arrow of enthalpy change is like in this direction. Okay, the direction of arrow is very important because the examiner says to draw these arrows. Okay, here we have products, reactants. This is activation energy, this is enthalpy change, and you can say this is delta H. Okay, and delta H is always negative for exothermic reactions. Okay, here we have energy profile diagram of exothermic reaction in the presence of a catalyst. Okay, this is exactly same axis as here. Okay, and reactants also will be here, and here will be the products. Okay, this is the reaction without catalyst, like this one. Okay, and we have to also show here the catalyzed reaction. Okay, so here this one will be the catalyzed reaction. Okay, you can observe here the activation energy EA has decreased. Okay, the EA is decreased for the catalyzed reaction. Okay, what is the purpose of catalyst? What is catalyst? We will discuss the catalyst in this lecture, but not right now. And X's and all other things will be same. This will be the delta H, and delta H will not change. Okay, either we use catalyst or not, delta H will remain same. Okay, so next examples of exothermic reactions, you can remember these. Okay, it is on up to you. Combustion reactions are always exo because in combustion heat is released. Reaction of reactive metal with water, single displacement reactions, double displacement reactions. What are single displacement and what are double displacement reactions? We have already discussed them in the previous lecture. Okay, neutralization reactions are also have been discussed, and polymerization, leave this at this spot because right now we have not done polymerization of ethene. Okay, and mostly addition reaction are also done, and oxidation of carbohydrates, dissolution of metal oxides, freezing, condensation, bond making, solidification. Okay, these are the examples of exothermic reactions. You can take screenshot of this. Okay, so now what are endothermic reactions?
Let's discuss them. कि भाई endothermic reactions क्या हैं? Chemical reactions in which heat is absorbed are known as endothermic reactions. ये भाई बिल्कुल exothermic के opposite है, vice versa है उसके, ठीक है? Let's discuss. Endo means in and right. Endo means in and therm mean heat. Okay, heat. So characteristics of endothermic reactions: heat is transferred from surrounding. In exothermic reaction, heat transfers from system to the surrounding, but in endothermic case, heat transfers from surrounding to the system. Okay, and at the start there is decrease in temperature of the system, but as the reaction proceed, the temperature of the system started to increase. And the number 3, walls of the beaker becomes cold. Okay, when that heat transfers from this to here, so automatically these walls become cool. Okay, high EA is required. Okay, we will discuss this why it is high in endothermic reactions. Okay, and right now we will draw energy profile diagram for endothermic reactions. Okay, and delta H is always positive for endothermic reactions. Okay, so here is the energy profile diagram for the endothermic reaction. Okay, and it is also opposite to the exothermic energy profile diagram, because reactants are at the bottom and products are at the product. Okay, so energy contents of products are higher than reactant. Heat is absorbed when the reactants are converted into products. Okay, the graphical representation of endothermic reactions is like this, and it is also an MCQs of past papers. Okay, so let's draw the energy profile diagram. Here we have products, and here we have reactants, and here we have products. Okay, this from here to here is activation energy. So you can observe that EA is much more as we compare to it with endothermic reaction. Okay, and the enthalpy change is positive, and the arrow is like in this direction. Okay, and the axis will be the same as in the exothermic reaction. Here we have enthalpy change. Okay, and here we have reaction progress, and you can say reaction pathway. Okay, now for catalyzed reaction. Okay, firstly we have to draw the same. You can draw like this. Sorry, reactants, products, and then for catalyzed reaction we have to draw it similarly, but right now like this. Okay, you can observe that the the activation energy for catalyzed reaction is less as we compare it with uncatalyzed reaction. Okay, so this is the concept of catalyzed and uncatalyzed reaction. Okay, moving forward, examples of endothermic reactions. You can take screenshot of it. Please take it. So the practice question. Here we have practice questions. Which of these processes are both endothermic? Okay, combustion cannot be an endo because heat is released in combustion, and in those reactions in which heat is released are known as exothermic reactions. Okay, so this option and this option are wrong. Okay, and fermentation is exothermic while photosynthesis is endothermic. So here's question option C is correct one. Okay,
cracking and photosynthesis are both endothermic, and you can find it over here, cracking and photosynthesis. Okay, so next question is, the burning of hydrogen is an exothermic reaction. Okay, which statement explains this? More bonds are broken than are formed. More bonds are formed than are broken. Overall, the bonds broken are stronger than those formed. Overall, bonds are formed are stronger than those broken. भाई नंबर एक पे जो एक्सोथर्मिक और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है ना, वो इस बेस पे नहीं माने जाते कि क्या कहते हैं कि मोर बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं या मोर बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं, ठीक है? इस बेस पे नहीं हम डिसाइड करते कि ये एक्सो है या एंडो है नंबर वन पे, ठीक है? हम डिसाइड इस बात पे करते हैं कि हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा हुई है या हीट रिलीज ज़्यादा हुई है, या हीट एब्जॉर्ब कम हुई है या हीट रिलीज कम हुई है, ठीक है? सो इट इज़ योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क. Okay, and if you feel any difficulty or you got any problem, you can ask me in the comments, okay, and I will reply to you as soon as possible. So it is your homework, and take the screenshot of this. Take the screenshot of this. Okay, so now activation energy. What is activation energy? It is the minimum amount of energy which is required to start the chemical reaction. Okay, this activation energy क्या है भाई? एक छोटी सी अमाउंट में एक छोटी सी एनर्जी है, ठीक है? छोटी एनर्जी तो नहीं, खैर छोटी अमाउंट यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन. मतलब कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या कहते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए. फर्ज करें हमारे पास एक स्टोव है, ठीक है, और हमारे पास मैच बॉक्स है. हम क्या करते हैं, छोटा सा बस उसको मैच बॉक्स से थोड़ा सा इग्नाइट करते हैं, तो बस यानी कि थोड़ी सी हमने एनर्जी प्रोवाइड की है ना, बाकी सारा काम तो स्टोव ने कर दिया, ठीक है? तो इसी तरह ना बस स्टार्ट करने के लिए ना रिएक्शन को हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है? तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी. कैटलिस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इट इज अ सब्सटेंस विच स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट रूट टू द सिस्टम विच हैज लेस एक्टिवेशन एनर्जी. हमने अभी पीछे डिस्कस भी किया था, मैंने दो आर्क्स बनाई थी आपके सामने, दो रिएक्शन, दो पाथवेज बनाए थे, एक नीचे वाला और एक जिसके अंदर कम एक्टिवेशन एनर्जी थी, और एक ज़्यादा वाला जो अनकैटलाइज था जिसके अंदर ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी थी, ठीक है? फॉर मूविंग फॉरवर्ड, कैटलिस्ट डज नॉट स्टार्ट दोज रिएक्शंस विच आर नॉट फिजिबल. मतलब कि जो रिएक्शन हो ही नहीं सकते ना, जो पॉसिबल ही नहीं है रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो वो रिएक्शन हो जाएंगे, वो मतलब कि वो नहीं होंगे, ठीक है? और स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज एनफ टू इंक्रीज स्पीड अप. अब देखें ये इंपॉर्टेंट है, देखें अब ये कि हमने 5 ग्राम्स कैटलिस्ट डाला, रिएक्शन स्पीड अप होगी. अब ऐसा नहीं है कि मैं 10 किलो कैटलिस्ट डाल दूंगा तो रिएक्शन और तेज हो जाएगा, रिएक्शन उतना ही तेज होगा, ठीक है? एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं हमारे पास अमाउंट तक रिएक्शन फास्ट होगा. आगे, if sufficient amount of catalyst is already added in a chemical reaction, then further increase in the amount of catalyst does not affect the rate of chemical reaction. Okay, catalyst may change its physical state during the chemical reaction, but chemically it does not consume. Okay, मतलब ये कि जो chemical reaction है ना, वो chemical मतलब कि जो कैटलिस्ट है ना, वो केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं करता. ओके, यानी कि वो उसके अंदर हिस्सा नहीं लेता. वो ऑल्दो वो तेज करता है, वो रिएक्शन फास्ट करता है, लेकिन वो टेक पार्ट नहीं करता किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है? और नंबर 2 पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमारे पास ये कि ये अपनी केमिकल जो प्रॉपर्टीज उनको रिटेन करता है, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इसकी शक्लो सूरत, इसकी शेप, और यू कैन से इट्स कलर कैन बी चेंज्ड. ओके, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, मतलब कि देखें भाई, एक इतना बड़ा हमारे पास ये है, अब मैंने इसको ही कट करके छोटे छोटे बना लिए हैं, ठीक है? छोटे छोटे बना लिए, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया. अब देखिए ना, इसके पास ज़्यादा सरफेस है कि ये सबस्ट्रेट के साथ जाके कनेक्ट कर सके और प्रोडक्ट्स बना सके, ठीक है? तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, यूजुअली ट्रांजिशन मेटल्स
जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं हमारे पास वो बेसिकली हमारे पास कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं, मतलब कि निकल iron, Fe and etc. Okay, so catalyst can take part in chemical reaction but is unchanged. As I told you already, catalyst does not increase the yield of a chemical reaction. Okay, catalyst does not affect the enthalpy change. As I told you already when we were drawing the energy profile diagram, it does not affect the enthalpy change. In a reversible reaction, catalyst increases the rate of forward and backward reaction simultaneously. Okay, these are some catalysts and you have to remember these. Okay, manufacturing of sulfuric acid, the catalyst used in this is V2O5, means vanadium pentoxide. Manufacture of ammonia, iron is used in this process. Manufacture of margarine, nickel is used. Catalytic converter, RHNIPT, these are the catalysts. Polymerization of ethene, TiCl4. Manufacture of ethanol from ethene, H3PO4, phosphoric acid basically. Cracking of crude oil or alkanes, AlO3 plus SiO2, and manufacture of silicone, CuCl. You have to remember all these catalysts. Okay, just you have to remember or nothing else. So here is a past paper question. The table gives the formula of catalysts used in some industrial processes. Okay, these are the catalysts and the question is how many different transition metals are included as elements or as compounds in the list of catalysts. Okay, 1, 2, 3. Let me show you with pencil. 1, 2, 3 and 4 and 5. Okay, so there are 5 transition elements in this table. So moving forward, we have a past paper question which shows the correct catalyst for each industrial reaction. Manufacture of sulfuric acid, we have vanadium pentoxide. Manufacture of ammonia, iron. Manufacture of margarine, nickel. Okay, you can do this question only when you have learned that table. Okay, so please learn that table. Explanation of exothermic reaction in terms of bond breaking and bond making. Guys, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है कि मैं आपको बता नहीं सकता. ठीक है ना, तो ये रटी रटाई बात है, ये लिखेंगे तो आपके 2 नंबर पक्के हैं. और जो इसके अंदर जो फर्स्ट लाइन है ना हमारे पास, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास, ये तो लिखनी है हमने. 1 नंबर तो हमारे पास इसका है. ठीक है ना, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है. बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड बॉन्ड मेकिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन less energy is absorbed in bond making and more energy is released in bond making. Okay, simple explanation of endothermic reactions in terms of bond breaking and bond making. Bond breaking is an endothermic process and bond making is an exothermic process. In an endothermic reaction, more energy is absorbed in bond breaking and less energy is released in bond making. भाई सिंपल है, बस आपको इसका रट्टा मार लेना. 2 नंबर आपके पक्के हैं. 2 नंबर का ही आता है ये मेजोरिटी में. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द एक्सो और एंडोथर्मिक नेचर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स. ठीक है, और विच बॉन्ड्स आर यानी कि हम इस बेस के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस बेस के ऊपर ना हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बॉन्ड्स ज़्यादा ब्रेक हो रहे हैं और बॉन्ड्स ज़्यादा मेक हो रहे हैं, तो ये हमारे पास एक्सो रिएक्शन है या एंडो. ठीक है, तो ये हमारे पास इस चीज़ से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम इसको. ठीक है, और तो हमारे पास है क्या कि एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि हमारे पास एनर्जी रिलीज और एनर्जी क्या कहते हैं हमारे पास एब्जॉर्ब की बेस के ऊपर हम इसको क्या करते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एंडो है या एक्सो. ठीक है, so moving forward, formula used to calculate, or this is the newly included chapter, this topic is newly included, means calculations of energy change. And in 2023 I appeared in 2023 and I gave the exams of 5070 and there was a question of 3 marks
for this, and the question was very easy. Okay, so formula, basically the formula is to calculate the enthalpy change of a chemical reaction by using bond energies. Delta H is equals to, it means to find the delta H, we have a formula: energy absorbed in bond breaking subtracted energy released bond making. You are finding it difficult to learn this, so simply you have to remember reactants सब्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट्स, कि भाई हमें रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट्स माइनस करने हैं, ठीक है, एंथैल्पी चेंज आ जाएगी हमारे पास। तो आपको ना इस तरह का ये एक टेबल दिया होगा हमारे पास जिसके अंदर एनर्जीज गिवन होंगी हमारे पास, ठीक है। तो देखें जी, हम सबसे पहले ये कर लेते हैं, ओ डबल बॉन्ड एस एंड एस डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। अब देखें ओ डबल बॉन्ड कहाँ पे, यहाँ पे ये रहा, ये देखें 435 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 435 लिखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। और यहाँ पे देखें दो है ना, ओ एस एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दो बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये देखें। तो ये हमारे पास, इसको हम अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने, उसके बाहर भी देखें 2 है हमारे पास, तो हम यहाँ भी 2 लगाएंगे, ठीक है। अब दोबारा से समझे, देखें हमारे पास इस तरह का एक टेबल गिवन होगा, ये ओ एस हमारे पास एक बॉन्ड बन रहा है, तो हम देखेंगे कि इसकी एनर्जी कहाँ पे गिवन है, ये देखें ओ एस या एस डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, बात एक ही है। तो हमारे पास 435 है, ठीक है, एक बॉन्ड की। तो यहाँ पे देखें दो बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो ये देखें हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 435 को। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि उसके बाद देखें बाहर कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 2 है ना, तो इसको 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एंड फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे देखें हमारे पास प्लस करना है हमने, और ओ डबल बॉन्ड ओ, इसका मतलब क्या है कि ओ डबल बॉन्ड ओ एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और इसकी एनर्जी हमें यहाँ पे गिवन है, ओ डबल बॉन्ड ओ की एनर्जी हमें क्या है, गिवन है, और वो एनर्जी क्या है 496। तो हम यहाँ पे 496 ऐड कर देंगे। तो भाई जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास जो चीज़ें होंगी, जो रिएक्टेंट्स होंगे हमारे पास, हम उनको प्लस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड पे जो भी चीज़ें होंगी हम उनको कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से देखें, अब यहाँ पे ओ डबल बॉन्ड एस, कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 1 2 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, तो 3 से 435 को मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखें इस टोटल के बाहर हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है ना, तो 435 इंटू 2 भी करना है, क्योंकि हमारे पास 2 बन रहे हैं ये। तो जब हमारे पास एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी, तो रिएक्टेंट्स में से हम प्रोडक्ट्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग हो रही है ना, तो हमने अभी क्या पढ़ा था, बॉन्ड मेकिंग इज ऑलवेज एक्सो। तो हम क्या करेंगे, तो इससे हमारे पास एक हिंट आ गया कि हमारे पास जो आंसर आएगा, जो इंथाल्पी चेंज आएगी, वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी हमारे पास, ठीक है। तो हम रिएक्टेंट्स सब्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट्स करेंगे, ठीक है, 740 सब्ट्रैक्टेड बाय 2610, तो हमारे पास आंसर कुछ ये आएगा, नेगेटिव 347 किलो जॉउल्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, हम इसको भी कर सकते हैं कि एच बॉन्ड एच बन रहा है हमारे पास, देखें 436, ओके 436 ओके, and Cl bond Cl, let me, guys, I am doing it here, okay, wait, 436, okay, and okay, let me write it over here. So guys, H bond H is 436, okay, write it over here, 436, okay, and plus Cl bond Cl, and the energy which is given in the table is 242 goes to HCl. Now HCl, the energy which is given in the table is 431. As the coefficient is 2 along with this, so we will multiply this by 2. Okay, now calculate, add these and multiply.
then the answer which we will obtain from here and the answer which we will obtain here, subtract this one from this one. Okay, subtract this one from this one and you will get your answer. Okay, hope it will be clear to you. If you have any query you can ask me. Okay, so this is our today's lecture and I hope you have understand it, and there was nothing there was nothing too much difficult in this chapter. The chapter was easy, and if you have any query you can ask me. I will reply to you as soon as possible. So मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. ओके